press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the introduction part of Political Science 10th Maharashtra State Board. So we will see what is the new syllabus of 10th Maharashtra State Board for Political Science. So there are 5 chapters. First chapter is Working of Constitution. Second chapter is the Electoral Process. Third chapter is Political Parties. Fourth chapter is Social and Political Movements. And last chapter is Challenges Faced by Indian Democracy. So in this video, we will see what are the different contents in these chapters and what we will study in 10th standard. So let us begin with the first chapter. So first chapter is Working of Constitution. So it is divided into 3 parts. First part is democracy. See, as we know, in India we are having democracy. India is having a democratic government. People are electing their representatives. हमारे यहाँ जो लोग हैं वो representatives को choose करते हैं, हमारे प्रतिनिधि को choose करते हैं और वो जाके हमारे लिए laws बनाते हैं, हमारे लिए rule करते हैं. Prime Minister of India is the main person in our country, but that Prime Minister is chosen by us, chosen by people of the country. We are having political maturity. See, there are many countries in the world that became independent and that adopted democratic government. Democratic government adopt किया बहुत सारे countries ने, but India was the country that gave voting rights to poor people or they gave voting rights to illiterate people. हमारे यहाँ जब independence हुआ तो हमने पुअर लोगों को, इलिटरेट लोगों को भी वोटिंग राइट्स दिया. सो हमारे यहाँ हमारे लीडर्स ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाया और आफ्टर सम टाइम आवर पॉलिटिकल सिस्टम और आवर डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बिकमिंग मैच्योर. अर्लियर पीपल वर नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, बट नाउ पीपल आर बिकमिंग एजुकेटेड. दे नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. दे आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट. सो आवर डेमोक्रेसी इज बिकमिंग मैच्योर. देन राइट टू वोट. In India, adult citizens are having right to vote. So people who are more than 18 years of age are having right to vote. पहले 21 years का voting limit था. So person above 21 years of age was having voting right. But after some time, when Rajiv Gandhi became Prime Minister of India, that age limit was reduced to 18. Now person who is more than 18 years of age, even if he is belonging to any caste, any religion, he is male or female, it is not mattering. We are giving him voting right. So right to vote. Then decentralization of economy. Decentralization of economy means division of power to the lower level. See, एक ही आदमी के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट होगा तो हम उसे डिक्टेटरशिप या वन पर्सन गवर्नमेंट बोल सकते हैं. अगर सिंगल लेवल पे गवर्नमेंट होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, यूनियन गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर पावर कॉन्सेंट्रेट होगा तो जो छोटे छोटे एरियाज है, जैसे हमारे विलेजेस है, हमारे टाउन्स है, उनके बारे में वो दिल्ली का गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि डिसीजन लेगा तो उनको पता नहीं होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे लोग फेस कर रहे हैं. सो वी आर हैविंग स्टेट गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट दैट मच सक्सेसफुल इन गवर्निंग द पीपल. स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इतना रिसोर्सेज नहीं होता है, इतने लोग नहीं होते कि वो जो लोअर लेवल तक, एकदम लास्ट लेवल तक डिसीजंस ले सके. इसलिए हमने रूरल गवर्नमेंट लाया, जैसे पंचायत, म्यूनसिपालिटीज. सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड द डेमोक्रेसी. पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लास्ट लेवल तक, एकदम एंड तक पर्सन है उसके पास हमने पावर दे दिया. सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. देन राइट टू इन्फॉर्मेशन. पीपल आर हैविंग राइट टू इन्फॉर्मेशन. अगर गवर्नमेंट के काम के बारे में हमें जानकारी चाहिए, देन वी कैन request government or we can ask the government to give us information. That was right to information. Right to Information Act was started in 2005. Next part is social justice and equality. So there is policy of reservation of seats. You must be knowing that we are having reservation for SC, ST, OBC and other people also. So this reservation is given to give them justice and give them equal treatment. See, people from SC, ST or other backward classes are backward. They are not having that much education facilities. So we are giving them reservations so that they can get education facilities or they can get jobs. Then scheduled caste and scheduled tribes, Prevention of Atrocities Act. See, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने या कोई ऑफिसर ने उनके अगेंस्ट कुछ गलत काम कर रहा है, सो देर इज अ एक्ट, देर इज अ लॉ दैट इज प्रोटेक्टिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल. Then there is provision of minorities. Last year also we have seen there is provision for minorities in our constitution. Minorities means जिनका population 50% से कम है. So in case of India, Muslims, Christians, these are minorities. So these people are having some special rights.
So there is some special rights that they can start their schools, they can preserve their culture, they can preach their religion. These are some special rights given to the minorities. Then laws relating to women and provision for representation. See, yeah, as you must be knowing, 33% seats are reserved for women in panchayat or in municipalities. अगर 100 सीट्स है तो उसमें से 33% सीट्स रिजर्व हो जाते हैं वुमेन के लिए. उस सीट्स पे सिर्फ वुमेन इलेक्शन में फाइट कर सकती है. इन केस ऑफ महाराष्ट्र वी आर हैविंग 50% सीट्स, तो हमने सीट्स रिजर्व कर दिया वुमेन को, क्योंकि वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. Then laws relating to women. There are many laws that are started to protect the women. Last year we have seen about Anti-Dowry Act. There are other Anti-Alimony Act. That are various laws that are made for protection of the women. Then third part is role of judiciary. Judiciary means court. So basic framework of constitution. There is a basic framework of constitution. There is basic structure of constitution. एक ऐसा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है. जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसा स्ट्रक्चर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो उसमें प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा तो उसमें गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ये स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं कर सकता है. कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट बोल नहीं सकता है कि मैं डिक्टेटरशिप लाऊंगा कंट्री में, पूरा गवर्नमेंट डिसमिस कर दूंगा और सिर्फ सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट होगा या सिंगल पर्सन का गवर्नमेंट होगा. ऐसे नहीं हो सकता. ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये बेसिक स्ट्रक्चर का देखभाल करने का काम होता है कोर्ट का. सो कोर्ट इज एक्टिंग एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर पॉलिटिकल पार्टीज या अगर लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का कोशिश किया और ये चेंज गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, देन कोर्ट विल स्टॉप दैट. Then there is significant judicial decisions. There are various decisions that were taken by court regarding women, regarding minorities. So we will study about this. In the second chapter, we will study about electoral process. Electoral process means how elections are carried out in India. So first is election commission. So election commission is a organization that is conducting elections. जो भी election conduct होता है हमारे यहाँ, जो भी elections होता है, ये government नहीं conduct करता है. गवर्नमेंट अगर कंडक्ट करेगा तो वही गवर्नमेंट आएगा वापस. सो वी आर हैविंग इलेक्शन कमीशन. दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस कराता है, दैट इज इलेक्शन कमीशन. देन वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. देन वी विल स्टडी अबाउट हाउ इलेक्शंस आर कैरिड आउट, हाउ कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड, हाउ कैंडिडेट्स आर गिवन सिंबल्स. So we will study about this. Then we will study about what are the challenges that are faced for conducting free and fair elections. Then we will study about electoral reforms, कि जो existing system है election का, उसमें हम कैसे और क्या बदलाव कर सकते हैं, that is electoral reforms. In the third chapter we will study about political parties. See, you must be knowing about various political parties like BJP, Shiv Sena or Congress, Maharashtra Navnirman Sena or Nationalist Congress Party or NCP. These are various political parties in Maharashtra. So we will study about what are the responsibilities and functions of political parties, what is the work of political parties. Then we will study about changing nature of political party system in India. So how political party has evolved. पहले party system कैसा था, अभी party system कैसा है. Then we will study about national parties. National parties example is Congress and BJP, जिनका पूरे country में support होता है, जिनको पूरे country में members होते हैं, that is national party. And regional party. Regional party मतलब एक region में होगा, एक state में होगा. Example is शिव सेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. Or we are having DMK political party in Tamil Nadu. DMK's full form is Dravidam Munnetra Kazhagam. So these are various political parties or regional political parties. We will study about what are national political parties and how are national political parties declared. कैसे national political parties बन जाते हैं, कैसे state political parties बन जाते हैं, and what are the criteria to become a national political party or state political party or regional political party. In the fourth chapter, we will study about social and political movements. See, there are various movements that are going on. जब भी movement होता है, कोई आंदोलन हो रहा है या कोई डिमांड कर रहे हैं लोग, then only we can say that people are aware of their rights. लोगों को अगर अपने rights के बारे में पता होगा तो ही लोग गवर्नमेंट के पास डिमांड करते हैं. So there are various movements. Few days back अन्ना हजारे was on fast. अन्ना हजारे ने उन्होंने अनशन किया था. So that is one of the movement. So ये वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमें लोकपाल बिल चाहिए. सो दे आर डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट. सो जितने ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, जितने ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, पता होता है उनको उनके राइट्स के बारे में, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. सो वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाई मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. देन वी विल स्टडी अबाउट वेरियस इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया लाइक फार्मर मूवमेंट. So there are various farmers that are coming together and they are demanding to government.
Then there are various women movements, or we are having consumer movements. We will study about different movements. In the 5th chapter, we will study about challenges faced by Indian democracy. So there are various challenges that are faced by Indian democracy. First challenge is communalism and terrorism. So last year also we have studied about communalism and terrorism. So we will study this year also. Then left extremists and Naxalism. Last year also we have studied about Naxalism. We have studied in internal problems of India. We have studied about Naxalism. What are the problems that are faced by India and how we are tackling Naxalism. We will study about this. Then corruption. Corruption is one of the important challenge faced by India. Corruption is very bad for the government. When government is giving something to the people, then there is lots of money that is taken as corruption. So government's money is not reaching to the people. So we will study about this. Then we will study about criminalization of politics. Criminalization of politics means many criminals are becoming part of politics. They are becoming leaders, they are becoming ministers. So this is also bad. If criminals will become part of politics, then they can use the political system and they can get benefits. अगर कोई चोर या फिर कोई criminals political system के part बन रहे, ministers बन रहे, तो वहाँ जाके corruption कर सकते हैं, अपने जो लोग हैं उनको फायदा दिला सकते हैं. So that should be stopped. Then social challenges. What are the various social challenges? We will study about this. And next we will see what are the steps that should be taken to make Indian democracy successful. ये सब चैलेंज है हमारे कंट्री में. देन वी हैव टू चेक, वी हैव टू सी हाउ चैलेंजेस कैन बी ओवरकम, हाउ वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस चैलेंजेस एंड हाउ वी हैव टू मेक अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुल इन इंडिया. So we will study about this in political science. So I will be making videos of political science. I will be making chapter wise videos of political science. So if you have understood, or if you have understood the introduction part, please subscribe to the channel. And please press the bell icon so that you can get the update regarding the new videos that I will be uploading. So thank you for watching.